Hi everyone, I'm Ishan. I am currently in Dubai, but today I want to make a video talking about the Japanese culture and everything that I learned from Japan. If you don't already know, मैं January के starting में 10 days spend किया था in Japan. I got to learn a lot about Japanese cultures and values. So I thought let me share it all with you in this video. I think there's a lot that we can learn from the rich culture that Japan has for everyone to learn and experience, and that's what I'll be talking about in this video. कुछ थोड़ी सी कहानियाँ share करूँगा so that you can understand my perspective. The first thing I experienced from Japan has to be the patience and discipline people have. राइट तो आई गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स. आप कभी भी अगर मेट्रो में चढ़ोगे, दिल्ली मेट्रो में या फिर बैंगलोर मेट्रो या कोई भी मेट्रो में चढ़ोगे इंडिया में, यू विल सी दैट बहुत भीड़ है. राइट लोग कहीं से भी जा रहे हैं, भाग रहे हैं. इट्स जस्ट कंप्लीट न्यूसेंस. बट इफ यू टेक अ लुक एट द जापानीज मेट्रो सिस्टम, जापानीज बुलेट ट्रेन, वहाँ पे आप जब जाओगे यू विल सी ऑर्डर. राइट वहाँ पे सब लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं. राइट नो वन इज इन अ हरी कि हमें जाना है, जल्दी जाना है एंड ऑल दैट. ट्रेन आती है, दरवाजे खुलते हैं, बीच में सब लोगों को निकलने दिया जाता है एंड देन साइड से आप अंदर जा सकते हो. एंड देर ऑल वेटिंग पेशेंटली. ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत कहीं जाने की जल्दी है और एनीथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग आई हैड फ्रॉम द पीपल ऑफ जापान हैज टू बी द पेशेंस एंड द डिसिप्लिन पीपल हैव. आपको और एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ पर आप अगर कहीं पे भी चल रहे होगे, अगर देयर इज अ रेड सिग्नल, अगर कोई गाड़ी नहीं भी है, even then people will stand and wait for the signal to go green and only then they will trespass, only then they will walk on the zebra crossing. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं that people have picked up. इंडिया में लोग ऐसे कहीं भी भाग जाते हैं, कहीं से भी भाग के निकल लेते हैं, and that doesn't really happen in Japan, right? So I think we all need to have a bit more patience and that will have more order around the country in India. एक और चीज़ जो मैंने सीखी from Japan is that everyone is working, right? सब लोग hard working है, सब लोग काम कर रहे हैं अपनी अपने जगह में. For example, there's a place where you can park your cars in Japan and you have to pay for that. What happens is, मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं कहीं भी गाड़ी लगा दूंगा तो क्या होगा, right? So they said that my friend who lives in Japan, he was like, सुबह सुबह बूढ़े बूढ़े अंकल होते हैं जिनको ये काम दिया हुआ है कि आप सुबह 4 बजे वॉक पे निकल जाओ एंड जहाँ पे भी कार पार्क नहीं हो रखी है द राइट स्पॉट, जस्ट राइट डाउन द नंबर ऑफ दैट एंड यू रिपोर्ट इट टू द पुलिस स्टेशन. जैसे छोटे छोटे काम निकाल दिए हैं फॉर ऑल द पीपल हु आर एल्डरली और anyone else as well, right? तो सब लोग काम कर रहे होते हैं. everyone is hard working, everyone is relentless at their work, and I think that's the biggest lesson I had from the country of Japan as well. Along with this, there's another thing called as kaizen. So kaizen एक Japanese keyword है, आपने सुना होगा इसके बारे में, which is the pursuit of becoming better every single time that you're doing something, right? तो जापान में एक कल्चर है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, हर बार आप जो चीज़ ट्राई कर रहे हो उसे ट्राई टू डू इट अ बिट बेटर. You know that perfection does not exist, yet you choose to do the task better every single time, and that's what the Japanese culture is all about, right? तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो, then maybe applying kaizen can help you out a lot. Thinking that मैं कैसे इस चीज़ को और अच्छे से कर सकता हूँ, how can I improve the way I'm doing something, could be making YouTube videos, it could be writing code, building software, or it could just be making designs or anything else as well. Having that mindset of becoming better every single time relentlessly, knowing that perfection does not exist, is what kaizen is all about. So that is another lesson I learned from Japan. Along with this, there's a thing called ikigai, जो आप सबको पता होगा. But along with ikigai, जो किताब है ikigai की, उसमें लिखा हुआ है कि Japan has some of the longest living people on earth, right? ऐसा क्यों होता है? जापान में लोग इतना लंबा क्यों जीते हैं? So उसका एक जो सीक्रेट है, it is the fact that they believe in community, in a sense of belonging. इसका क्या मतलब है? So basically all the elderly people when they come from work, वो सब काम करने के बाद साथ में एक गैदरिंग में बैठते हैं and they just talk, right? And they have that community moment every single day. उससे क्या होता है? They feel that they are part of something bigger and they want to work together, right? So I think that is another thing that I learned from the Japanese culture. Along with this, there's a trust in the society, I think, right? So I'll give you an example. For every 23 people in Japan, there is one vending machine. There are over 40 lakh vending machines in Japan, and you can get anything and everything you can imagine, right? अगर आपको कुछ ड्रिंक चाहिए, अगर आपको कुछ पूरी मील चाहिए, अपने लिए पूरा खाना खाना है आपको, तो आपको पूरा खाना मिल जाएगा फ्रॉम वेंडिंग मशीन. अगर आपको सिम कार्ड खरीदनी है वो मिल जाएगा वेंडिंग मशीन से. अगर आपको कोई टॉय खरीदना है वो भी वेंडिंग मशीन से मिल जाएगा.
Even if you want to go and order food at a restaurant, there's a vending machine for that. So you input the cash, you choose what you want, and you get it. It's a very popular thing in Japan, right? So every place you'll see one or the other vending machine wherever you go. एंड मैंने ये अपने दोस्त से पूछा, वहाँ पे मेरे दोस्त काम कर रहे थे इन यूनिक्लो, उन्होंने उनसे पूछा कि भैया ये अगर भारत में आ जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, राइट? लाइक इफ वी कैन हैव दैट इन इंडिया, हाउ अमेजिंग वुड इट बी? एंड ही सेड दैट कि इंडिया में नहीं चलेगा. अ वेंडिंग मशीन सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया बिकॉज देयर इज नो ट्रस्ट. लोग चोरी कर लेते हैं कोई भी चीज़, राइट? लोग एटीएम बैंक उखाड़ के ले जाते हैं या फिर कुछ भी कर लेते हैं. इट्स वेरी हार्ड टू डू समथिंग लाइक दिस इन इंडिया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रस्ट that there is in the society, right? Another example I'll give you. जापान में छोटे बच्चों को सिखाया जाता है how can they travel on their own in the Japan metro lines, right? तो आपको बहुत सारे सुबह सुबह बच्चे दिखेंगे छोटे छोटे जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं अपने आप, राइट? एंड दे नो उन्हें कौन सा बटन दबाना है, कौन सी टिकट लेनी है, कहाँ से कहाँ जाना है. They've learned everything. One more thing you'll notice is they all have these yellow caps on them. राइट? तो हर एक छोटा बच्चा जो होता है जो स्कूल जा रहा होता है, दे हैव दिस येलो कैप्स. उससे क्या होता है, नाउ बिकॉज देयर इज सो मच ट्रस्ट इन द सोसाइटी इन जापान, व्हेनेवर समवन सीज अ किड विद अ येलो कैप, दे नो दैट दिस इज अ किड एंड यू हैव टू हेल्प द किड, राइट? सो दे आर ऑलवेज हेल्पफुल टू दोज किड्स हु आर गोइंग टू द स्कूल एंड दे कैन टेल दैट बिकॉज ऑफ द येलो कैप्स दैट दे आर वेयरिंग. सो एनीथिंग लाइक यू नो, अगर आप बहुत जल्दी जा रहे हो, सामने कोई येलो कैप पहना हुआ बच्चा है, तो यू विल वेट फॉर देम, यू विल guide them to the right path. So there is a sense of community, of belonging, which is there in Japan, which I don't see as much in other countries, right? So that is just a lesson that I learned from Japan as well. Another thing I learned is a Japanese saving technique, right? So it's called as kakibo. Kakibo क्या होता है? Basically, kakibo is a way for you to save money and make sure that you don't spend money recklessly wherever you are going. तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि बहुत सारे लोग अपना एक पेन एंड पेपर लेके घूमते हैं, वहाँ पे सब कुछ लिखते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करते हैं, दे विल मेक कॉलम्स, राइट? दे विल मेक अ कॉलम ऑफ नीड्स एंड वांट्स, and at the end they will do a total and they will write how much do they actually get paid, like what is their salary like. And once they do that, they can calculate everything. So they always have that with them. And जब भी वो कुछ चीज़ खरीद रहे होते हैं, they just write it down over there and they write down अगर ये need है या फिर want है, and how much are they saving at the end of the month. It's a very simple system that they have on paper which helps them make sure that they are not spending recklessly and they can see everything on paper itself. So again, this is not something complex जैसे कुछ Notion पे जाके कुछ कर रहे हैं या फिर Excel sheet पे कुछ कर रहे हैं. It's just them using a simple paper and writing down everything that they are spending money on, and that is kakibo for you from Japan. एक और चीज़ जो मैंने सीखी जापान से has to be shikata ganai. शिकाता गनाई क्या होता है? शिकाता गनाई इज बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इट इज एंड नॉट वरिंग अबाउट व्हाट यू डू नॉट हैव. आई विल गिव एन एग्जांपल, राइट? जब मैं जापान में लैंड हुआ, उससे एक दिन पहले एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था इन जापान, एंड उसी दिन जिस दिन मैं लैंड हुआ, एक प्लेन वहाँ पे जल भी गया एट अ एयरपोर्ट दैट दे हैव. नाउ मोस्ट पीपल विल पैनिक एट दिस पॉइंट एंड दिल बी लाइक ये क्या हो गया, एंड दे वोंट नो हाउ टू रिएक्ट. Japan has been through so many difficulties that they've learned to accept what it is, right? Acceptance of the situation that you are in and then working on what you can do. And that is what Shikata Ganai is all about, right? So you have to accept who you are and your situations and then try to make the best of what you have. So I think that is another great lesson that you can learn from Japan. But the last one that I want to talk about has to be kintsugi. Now, kintsugi is an art form in Japan wherein you can look at the crockery that they have. They will break the crockery, तोड़ देंगे, कोई भी वास होगा या फिर कुछ कटलरी होगी, and they will rebuild it using a golden फेविकॉल और गम. And उससे क्या होगा? The end result will be a beautiful vase and it will look amazing because of those golden imperfections that they have, right? जो भी वो टूटे हुए parts थे उनको वो जोड़ते हैं with that golden gum and it ends up looking amazing, even more beautiful than the past. So iska in your life, you can think of it as looking at all the flaws you have, accepting it, and then thinking about how can you make it your strengths, right? Like in my experience, I was never the best communicator, right? I did not get into IITs. I got into BITS. So I looked at all of these problems, all of these flaws,
and then I thought about how can I use them to my advantage. So I used this setback of not getting into an IIT as a way and as a motivator for me to work harder on my skills, to work harder on myself and my capabilities. So again, kintsugi is a great thing that you can learn from Japan as well. तो अगेन बहुत सारी हमने चीज़ों में बात करी. सबसे पहले आई थिंक पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एवरीवन इज वर्किंग, एवरीवन इज हार्ड वर्किंग. Thirdly, we talked about kaizen, the pursuit to improve every single time. Then we talked about shikata ganai and kintsugi and ikigai and why people live long in Japan. And so I think this is what the essence of Japan was for me. मुझे बहुत अच्छा लगा travel करके. It's one of the safest countries to travel in around the world, and it's also one of the cleanest places I have ever seen. So that was my video. आप बताओ what have you learned from Japan in the comment section below. Thank you so much for watching this video. मैं आ गया हूँ दुबई में. I am currently in the Marina Walk area. I am here to record a podcast with a billionaire of Dubai who came from the streets of Mumbai. I'll be sharing the entire journey of his on the podcast, so stay tuned for that as well. इस वीडियो को शेयर करो with a friend of yours. I am always trying to make my videos better, share everything I'm learning about life and work with all of you. So if that sounds exciting, make sure that you hit the like button and subscribe as well. Thanks a lot for watching. I'll see you all in next video. Bye bye.